In previous lectures, we have been through list and tuples. They were the two data structures from module 2. And these are the two remaining ones, dictionaries and sets. Hopefully, we'll be covering in this weekend, today and tomorrow. Each of these data structures have their own significance. Whereas in here, if we talk about dictionary, it is built-in data type. What is built-in data type? Here, the best example for dictionaries, why they differ from the other data structures is that it provides a mapping of objects which maps with the value of an object with another. So basically, if you see at the top level, in terms of any data storage with respect to data type, function, method, any module, package, function, anything, it is in terms of an object. That's why this is one of the parameter why we call it as object-oriented language, right? So Python is purely object-oriented language. That's why all these four data structures are very strictly attached to the parameters which prove that this kind of language is called as object oriented. More detail we'll be seeing in classes and object when we start it, right? So for this dictionary, what we have here is pair of word and corresponding meaning. The way you look into dictionary, right? If you want to search a meaning for a particular word, you search it alphabetically and corresponding meaning is given in front of that word. Same, we can store it. If I want to make it in terms of digital, I'll store it in terms of key and value pairs, right? So there are two parts here. As I said, for dictionary, zoom a little bit. For dictionary, a mapping object, it maps value of one object with the another. So here will be a comparison. So associated values will be stored in two parts. Values will be stored in two parts. So those two parts will be, let's see it as A, which is a key. We may say it as word where we store it, and the other is a value. That means, as in dictionary, what you find it as meaning. See why they have named it as dictionary. The same way, Python has key value pairs. Key colon value pairs. So in this structure, by assigning a colon, key and value are written. That means if you want to search any key, associated value must be there, right? So you, for filtration purpose, for slicing, you can go with only keys, only values, search with key, search with value, search with key and value, both having these values, you can do it. So that helps you to bifurcate and have more accuracy in searching the keywords. And obviously it is again, if you have multiple elements into dictionary, it is separated by commas and again represented by curly brackets. So this is important part. Dictionaries are represented by curly braces. This is your opening and closing. So this is how you represent a dictionary. Now, there are some, you can say, features why we use this, because this is mostly used for data storage. As in this kind of dictionary data storage is also, you can say, mutable compared to list and tuple. Sorry, only for list. Tuples are immutable, they cannot be changed. Dictionaries are, in terms of data storage, are mutable compared to list. So the components of dictionary here were basically, can say, made for storing keys and values as in pairs, right? So keys must have only one component, as in one word will have one meaning, but the
separate meanings, you can use commas. And to represent between keys and values, you will be using colon. Let's see an example how you can write it. Suppose I take D1 as my dictionary 1, curly braces representing. Now, if I want to represent multiple, I'll be using a list. So list can also be used, but we'll see that later. But I'll give you a brief overview कि simple dictionary कैसे हम लोग write करते हैं. Okay. So what I'll do is I'll take some can say now this is a state associated with colon. Again, the value which we are going to see, we'll give it this, separated by comma, another state, colon. This is Gujarati is a key. What I want to store, which is being associated. Now here, all of these keys and values will be assigned to a variable, which in terms will be a dictionary. So this kind of storage is only allowed in dictionary. So here, and in same way you can store multiple. Similarly, you can store other numbers also. So let's take it as numbers as variable, curly braces to store the data. Now again, for numbers, you do not have to take colons, right? The codes. Here, you can store the data as 10. This is a very good form of storage, which really helps in terms of Python programming to search also. Optimization, if you think from optimization point of view, dictionaries give you a very good performance. In this way, you can store, or vice versa. That means having a string, storing some other numbers. For example, if you are storing marks, now here you will be needing a name as in string and associated marks with it. Again, no double quotes for numbers. Now I'll print it. You're getting the data as we have seen for list and tuple, right? Curly braces, the data is represented as for the dictionaries. Now, as I said, if I want to represent multiple, now for each time, there's no category here. You cannot say that this is the keys being treated as states here, and it's associated or treated as these cities within that state, right? It is just a representation of one-on-one value. What if I want to write multiple city names in the state of Maharashtra, right? Dictionary allows only one pairing. One key will be associated with one value. In this case, I can use a key which is associated with multiple values which can be stored in square brackets. Square brackets again represents list. So I'll show you the example. Suppose I'm using the same variable as T1 and I'll take it as fruit. So we have fruit, colon, we have written the key, now the value. If I am going for multiple, inside that, inside the curly braces, I'm going to use square brackets and I'll mention multiple.
Hmm? Now outside the square bracket, because I'm only taking only two fruits in the key fruit. Now separated by comma, hmm, using another keyword as flower, square brackets to represent multiple entries, separated by comma. Same way you can use for different countries also. It is accepting this kind of string. So dictionaries can use tuples list also. Hmm? But this should be written in this way only, as in key and value, right? So you cannot write it as the reverse. I'll show you how reverse can be written, because many of think that it is just a difference of semicolon, but first part is treated as key always, and the remaining part associated with colon will be treated as the values. So if I try to mention fruit after banana, after the value, hmm, in this way, mostly this is asked by the interviewers. So what is the association? Because the where you ask the dictionary questions, they will ask you that these are stored in key and value pairs, right? You answer it. So they will switch it. They will ask it, if this is key and this is pair, will it be able to recognize? If there are multiple, it will be treated as values. And if it is single, it will be treated as key. So that is not the case. We'll print D1 and you'll be getting an error, right? So list here, what list you're presenting is not being a type of hash. Hash represents a key and value pair. Mapping is already done in that kind of data structure where dictionary values will not be changed. So the way the syntax of internally design of that dictionary is that has to be maintained. First will be a single keyword which represents a key. Now one key, that is one word, may have multiple meanings also, right? So you can represent it in that way, but by using list, right? Otherwise, what dictionary says, what it represents, one key associated with one value. In dictionary also, in meaning dictionary also, word dictionary, you can find that one word may have multiple meanings. In the same way, you have to write it, but this is the wrong syntax. This is not acceptable by the Python. Hmm? I'll just copy this and take two different variables as D1 and D2. Execute this. Now there are some operators here also. What kind of operators we can use? We'll be seeing it one by one. As we have seen this, this is also an operator, right? Because it is inside dictionary, right? So dictionary in Python is not a sequence. Here the elements in dictionary are not indexed because there are keys. So you can use square brackets operator to fetch the value associated with a certain key in the dictionary's object. So always treat keys as your objects. Hmm? So for example, I'm using this D1 as just for states. We'll copy this. Hmm? Now what I'll do is I'll print capital of Gujarat. Separated by commas, in which variable I'm stored it as D1, and I'll represent the type of list
as Gujarat. Hmm. So associated with this key, whatever is it, it will be appending with this with my message, right? So here there's no part of indexing. Hmm. There are only keys and values. You can put up any multiple keys and values. Now, one of the error that if such kind of statement key is not present, suppose what I'm not taken, I'll take some Karnataka. So now this will give you an error because this key is not present in this D1 and I'm trying to search the associated value. That's a key error. This is not defined anywhere in it, right? So searching is very fast compared to any other data structure because keys and values are associated. So it is very easy to segregate and find the data. There are a few methods we'll see. If I store in some variable dictionary dot get, so this can have get method to get the list of the objects used in the entire dictionary. You have to write here the key name. For example, if you are going to print here capital of Gujarat is, then for here you must have part O named here as capitals. We'll rename it. This is capitals dot using get function. Now no square brackets, as it is a function, it will be using this parameter. Uh, End of file parsing. Yes, one more bracket is remaining. Now it is trying to search here with this. You can use this function also either, or by using list. If you do not want to use function, by using list, call its key. It will give you the associated value. Either or. Okay, clear up to this point? Now you can use empty dictionary also, as you used for list and tuples also. Dictionary D2 curly braces will use print D1 print D2. So empty both by using the function itself. By using this curly braces, you record it as a function, right? And by using curly braces, you directly note it as you're calling the dictionary where no elements are सर present. सेट है ये D2 सेट होगा क्या होगा? D2 सर सेट कैटेगरीज में आएगा सर डिक्शनरी नहीं होगा D2 हाँ सेट्स में आएगा, but here you can implement in this way also. मतलब to get a function inbuilt dictionary वाला भी होता है as get था. Now let's take some keyword arguments. की वैल्यूज पेयर्स तो होंगे, बट आर्ग्यूमेंट्स अगर मेरे को प्रिंट करना है associated values with it, you can directly assign it by using this dict function. So what it will do, it will take the number of keyword arguments which you are passing as name and value pairs, and it will return a dictionary object with the name
as key and it's associated to the value, whatever value you are being associated. If I take a variable to store here as, and I use the function, suppose I'm storing A as 100, B as 200. I take one more variable to store the value. दूसरा string भी ले सकते हैं हम लोग. And I'll print these two. First D1 and D2. ध्यान रही, ये अगर आपको कर्ली ब्रेसेस नहीं दिखाया तो दिस विल रिप्रेजेंट अ फंक्शन ऑफ डिक्शनरी. इनडायरेक्टली यू आर कॉलिंग दिस सेम मेथड, कोई फर्क नहीं है, राइट. अगर आप कर्ली ब्रेसेस से लिख रहे हो तो इट विल रिप्रेजेंट एज डिक्शनरी, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग इट बट यू स्टिल वांट टू रिप्रेजेंट द डेटा इन टर्म्स ऑफ की एंड वैल्यूज, तो आप ये फंक्शन यूज कर सकते हैं. दिस इज इनबिल्ट फंक्शन. डिक्शनरी फंक्शन जो है इनबिल्ट है, एंड इट विल अलाउ यू to have a kind of storage in terms of keys and values. So note this function, this will be important interview point of view से ये पूछा जाता है, if you are being not allowed to use curly braces, can you still represent the data in terms of key and value pairs. तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कोलन आ रहा है यहाँ पे by using this function. So the representation ultimately is in terms of curly braces. Clear with this point here till now? There are lots of methods here. These are some of the methods which are being frequently used. So what we'll be doing is we'll be seeing those most frequently used, because moreover here I'll be sharing with the functions, और वो functions आपको करने होंगे फिर. सेम फंक्शंस जैसे आपने लिस्ट और डबल में किए थे, मोर ओवर ऑल द कीवर्ड्स आर सेम, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो. सो either of the data structures में जो उसको स्टोरिंग का मेथड कैसा है, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. जो अपने पॉप, रिमूव, अपडेट, ऐड तो खैर डायरेक्टली कर सकते हैं. यू कैन रिमूव एनी आइटम्स ऑफ कीज एंड वैल्यूज. यू कैन यूज इट. there's one more method as clear, जो क्या करता है, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स. क्लियर आई गेस पहले दो इसमें नहीं था, देयर वाज रिमूव, डिलीट, पॉप. तो यहाँ पे क्लियर फंक्शन एक होता है, सो यू कैन यूज इन दिस सेम वे. क्लियर D1 डॉट क्लियर कर देंगे तो D1 के जो भी सारे एलिमेंट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे. तो चलो ये एक नंबर्स का जो था वो कॉपी कर लेता हूँ मैं. आई शो यू द एग्जांपल दैट नंबर्स अगर हमें क्लियर करने हैं सारे, copy this and paste it over here. Numbers dot clear. अब ये क्लियर होने के बाद है, क्लियर होने के पहले भी हम लोग प्रिंट करते हैं. लिख देंगे वहां पे नंबर्स बिफोर क्लियर मेथड. तो नंबर्स बिफोर क्लियर मेथड वेयर दीज, मतलब जो ऑलरेडी नंबर्स में प्रेजेंट होगा. अब ये लाइन खत्म होने के बाद जो आउटपुट दिया है उसने यहाँ तक दिया. अब इसके बाद क्लियर कहा हमने, तो एवरीथिंग विल बी फ्लश्ड अवे. कोई भी डेटा एलिमेंट में एलिमेंट जो है
वो यहाँ की इसमें स्टोर नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फ्लश्ड अवे, रिमूव्ड अवे। वन मोर मेथड जो यूज किया जाता है, अगेन विल यूज फॉर नंबर्स डॉट आइटम्स। इट विल गिव यू द डिक्शनरी आइटम्स प्रेजेंट हियर। अब जबकि हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है, देयर आर नो ऑब्जेक्ट्स टू डिस्प्ले, क्या करते हैं, इसको वापस रीरन करते हैं। नाउ इट इज डिस्प्लेइंग। तो ये नंबर्स इसमें आ गए, स्टोर्ड हैं, वी हैव प्रिंटेड इट हियर। तो उसके कौन कौन से आइटम्स है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, लिस्ट कर रहा है। नाउ यू कैन सी अगेन इट इज शोइंग यू एज एन आइटम्स। आइटम्स दैट मीन्स इट विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ डिक्शनरी, इट विल बी इन टर्म्स ऑफ लिस्ट अगेन। तो ये डायनामिक अपडेशन होता है डिक्शनरी, wherein these items can check how dynamically the data can be updated। अगर आपको कोई वैल्यू अपडेट करना है इसमें से, आई गेस नंबर्स डॉट यू यूज फंक्शन एज अपडेट। अब डिक्शनरी है, लेकिन डिक्शनरी के लिए आपको पहले फंक्शन है, अपडेट फंक्शन है, तो फंक्शन का पैरेंथेसिस दे दो। नाउ यू आर ऑपरेटिंग ऑन डिक्शनरी, इसलिए कर्ली ब्रेसेस। अब कौन से वाले को चेक करना है, अपडेट कौन से वाले को करना है। सो आई पुट इट हियर एज 50। इनिशियली देखो आप 10 20 30 40 था, अपडेट कर दिया वन मोर एज 50। अब जैसे डिक्शनरी फॉर नंबर्स एंड आइटम्स थे, इट विल बी फॉर कीज ऑल्सो। डिक्शनरीज कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ लूप। अगर यही नंबर्स हम ले रहे हैं, ये वाला सीन ऑफ 40, अब इसमें अपडेट हो जाके क्या हो गया, नया 50 भी इंक्लूड होगा। सो इफ आई वांट टू प्रिंट इट एक्स इन numbers, and to print that variable repeatedly, अब यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है देखो, कीज प्रिंट हो रहे हैं उसके। तो दोनों पेयर में चाहिए तो, क्योंकि डेटा रिप्रेजेंटेशन 10 में क्या है मेरे को नहीं मालूम, यहाँ पे दिखा रहा है वो सिर्फ की दिखा रहा है। इट इज टेकिंग द ओनली की वैल्यूज, इफ आई वांट बोथ की एज वेल एज वैल्यू, तो इधर प्रिंट में थोड़ा चेंज करते हैं। विल रिप्रेजेंट इट एज कोलन, बीच में कोलन देंगे सो दैट इट इज सेपरेटेड, एंड विल पास इट एज अरेज एक्स। तो ये वाला एक्स क्या प्रेजेंट करेगा, कि ये नंबर्स फॉर लूप होने की वजह से उसका एक इंडेक्स बना के, इंडेक्स का नंबर सामने सिर्फ असाइन कर देंगे। हम्म, जो भी वैल्यू यहाँ पे आपने दिया है, दैट वैल्यू विल बी असाइंड टू दिस वन। इंटरनली फॉर लूप में वो इंडेक्सिंग सिर्फ इसी लाइन को करेगा, अदरवाइज देयर इज नो इंडेक्सिंग पार्ट इन डिक्शनरी, देयर इज ओनली कीज एंड वैल्यूज। वो की सर्च करेगा, एनी वैल्यू एसोसिएटेड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। अगर आपको कुछ अलग तरीका भी एक है फॉर लूप यूज करके, एक्स इन numbers dot items, you can get the data in this way also। तो ये जो फंक्शन ऊपर हमने यूज किया है आइटम्स, राइट, ये आप यूज कर सकते हैं इसी तरह से हियर ऑल्सो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
यू कैन ऑल्सो कॉपी वन डिक्शनरी, जैसे कि हमने लास्ट मेथड्स में देखा था। इट कैन बी कॉपीड, मतलब आपको वही अगर कंटेंट्स कहीं किसी दूसरे वेरिएबल में ऐड करने हैं, अपेंड करने हैं, या फिर सेम ऑब्जेक्ट बनाना है, कॉपी करना है, सो दैट थिंग कैन ऑल्सो बी डन। अगर मैंने एक डिक्शनरी लिया है HD1 और उसमें ले रहा हूँ ए का वैल्यू, and I'm taking another as T2 and assigning the contents to D1। अब मैं प्रिंट करता हूँ D1 एंड D2। दोनों कंटेंट्स सेम होंगे। दिस हेल्प्स अस कि उसको अपने स्टोर किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस रिपीटेटिव डेटा अगर होगा तब भी वो यूज किया जाएगा। दिस कैन बी डन, और कॉपी मेथड भी है, D2 इक्वल टू D1 डॉट कॉपी। Same elements will be copied by using function or using assignment operator. You can do both. So I'll give you some methods. आपको उसको ट्राई करना है। The more you practice ना, it will be very good for you, क्योंकि functions का नाम लिखना है सिर्फ। जब आप ये ट्राई करने लगते हो तो you get a habit। Has की, उसको की है या नहीं है वो चेक करेगा। उसको पैरामीटर पास करना होगा एज एन की। ये हमने देखा था, टू चेक द कीज। पॉप फंक्शन कैन बी यूज्ड, ये पहले के दोनों डेटा सेक्शन में हमने देखा है हाउ टू यूज इट। पॉप आइटम टू रिमूव वन आइटम, आप इसको वैल्यू पास करेंगे की वैल्यू। अपडेट देखा हमने, एंड वी हैव सीन वैल्यूज। So you have to complete this. I'll make a statement here. ओके, चैट में डिस्कशन कुल अलग ही चल रहा है। ओके, कैन एनीवन शो मी एनी टू मेथड्स फ्रॉम दिस? एक डिक्शनरी लेके कोई भी दो मेथड्स आप रन करके दिखाओ मेरे को। यस राजू, यू कैन गो फॉर इट। यस यस। You can paste the output
इन द चैट बॉक्स, तो बाकियों को भी कोड मिल जाएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो डू। कौन सा फर्स्ट मेथड लिया है? ये अभी टाइप किया? Okay, pop item, you have pop, get the name from keys, good, गुड। आई होप एवरीवन चैट में से आपको ये कोड मिल गया होगा। सेव दिस कोड ऑन योर मशीन because you have to perform these 10 functions used in dictionary. कि कल हम लोग सेट्स लेंगे, अपडेट फंक्शन। I'll explain here, इसके नीचे में कर देता हूँ। ये नहीं समझ में आया, ये वाला? एग्जैक्टली जैसे एक्सटेंड्स हमने फंक्शन यूज किया था वैसे ही अपडेट है। क्योंकि यहाँ पे डिक्शनरी में आपको इंडेक्स नहीं मिलेगा, इट विल बी अपेंडिंग इट डायरेक्टली। तो यहाँ पे हमने क्या किया था देखो अरूप, वी हैव नंबर्स हियर। तो नंबर्स में कितने नंबर्स थे? 10, 20, 30 एंड 40 एसोसिएटेड वैल्यूज हैं उसके साथ में। तो ये उसके वैल्यूज हैं। व्हाट वी आर डूइंग हियर इज नंबर्स डॉट अपडेट कर रहे हैं। तो हमें अपडेट क्या करना है, वो जो नंबर्स का वेरिएबल हमने स्टोर किया है डिक्शनरी में उसमें कुछ ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त फंक्शन है इसलिए राउंड पैरेंथेसिस देंगे, क्योंकि वो एक पैरामीटर लेगा, राइट, एज इट इज अ फंक्शन। तो उसका पैरामीटर राउंड ब्रैकेट्स हो गया। अब पैरामीटर क्या पास करना है? इट इज नंबर्स जो है वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर में आता है? इट कम्स अंडर डिक्शनरी, क्योंकि उसका रिप्रेजेंटेशन इस तरह से है की वैल्यू पेयर में। अगर आपको अपडेट करना है उसी तरह से, यू हैव टू इंसर्ट अ डिक्शनरी, राइट। अब डिक्शनरी में आपने क्या लिया देखो, नया की लिया है और उसको वैल्यू एसोसिएट कर दिया एंड एग्जीक्यूटेड द न्यू लाइन। तो जब ऐड करेंगे तो ये 40 पुराना वाला था नंबर्स, नाउ इट इज अपडेटेड टू 50। ओके, गुड अरूप। क्वेरीज हो तो पूछा करो। द मोमेंट यू रिजॉल्व द क्वेरीज ऑन द सेम डे इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू वर्क फॉर द एंटायर वीक। एंड आई एम सीइंग दैट ऑन व्हाट्सएप वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आर गिविंग द असाइनमेंट्स। बाकियों को भी आपको असाइनमेंट करने होंगे। Sir, we have to submit it on WhatsApp or you will check in नहीं, live session. व्हाट्सएप पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, विल विल कीप अ ट्रैक ऑफ इट। Okay, sir. पिछले असाइनमेंट्स बाकियों ने सब अपलोड किए हैं। सर डिक्शनरी और सर टपल वाला नहीं किया है सर। डिक्शनरी, हाँ, वो जो लास्ट वीक में टपल का दिया था वो नहीं किया। नो सर, सर क्योंकि सर मेरे एग्जाम्स चल रहे थे ना सर कॉलेज के, सर थोड़ा बिजी था। सो योर एग्जाम्स आर ओवर नाउ। ये सर अभी हो गया सर। हाँ तो आज कल में देखूंगा। जी, ये आज वाला और लास्ट का टपल। ओके व्हाट आई नीड सर। फ्रॉम यू इज योर प्रैक्टिस।
सर व्हाट्सएप ग्रुप पर ही करना है क्या सारे? हाँ हाँ, व्हाट्सएप पे कर दो, विल कीप ट्रैक ऑफ ऑल दोस। ओके सर, तो सारे कर दूं मैं सर जो भी किए हैं हाँ, स्टार्टिंग सारे से? कर दो, उसका एक पीडीएफ बनाओ अगर आप ऐसा? यूज कर रहे हो तो, और अपलोड कर दो, उसको नाम दे दो टाइटल, मतलब वो लिखने के लिए इजी हो जाएगा रिकॉर्ड के लिए। हम्म। ओके सर, ओके। See, ये जो मैं आपको ये 10 फंक्शन दे रहा हूँ ना, दीज दीज आर वेरी लेस, राइट, मतलब ये हैंडी है कि आप जब प्रैक्टिस करें तो टाइप करना सीखें वो। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम लोग उसको सिंटैक्स भी नहीं समझ पाते। तो द लॉजिक इज अपार्ट, मतलब आपको एक एप्लीकेशन या फिर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट जब दिया जाएगा, यू हैव टू थिंक ओवर दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट की इसको मैं एग्जीक्यूट कैसे करूं, क्या लॉजिक हो सकता है। नाउ इफ यू आर क्लियर विथ योर लॉजिक बट नॉट क्लियर विथ हाउ टू राइट द कोड, आप एक्सप्रेस कैसे करोगे कि आपको ये समझा है। हाउ विल यू गिव द आउटपुट। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि वो जो कीवर्ड्स है ना ये सारे डिक्शनरी के और एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर, इट मस्ट बी वेरी हैंडी। आपको वो पूरा टाइप करने में बहुत इजी होना चाहिए। यू मस्ट नॉट सर्च द कीवर्ड्स ऑन कीबोर्ड की ये कहाँ है पे है और इसको किस तरह से लिखना होता है। सो इफ जैसे कि अपडेट मेथड यहाँ पे दिखाया, बहुत सारे लोग यहाँ पे चूक जाते हैं। आई हैव सीन दिस मिस्टेक डन बाय मेनी पीपल की वो डायरेक्टली अपडेट करके कर्ली ब्रैकेट दे रहे हैं। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस अपडेट फंक्शन करेंटली हियर, इसको मैं कट करता हूँ, इज अ फंक्शन। वो फंक्शन में आप डिक्शनरी पास कर रहे हो तो आपको डिक्शनरी का ब्रैकेट देना होगा, कर्ली ब्रेसेस। ये माइनर मिस्टेक है। अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो यू कैन इजीली जस्टिफाई दिस, बट वंस योर प्रोग्राम इज गेटिंग एन एरर ना, तो सामने एक इंप्रेशन बन जाता है कि यू आर नॉट दैट हैंडी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 5 दिन जो मिलते हैं, यू प्रैक्टिस इट वेरी वेल। ओके, एनी अदर क्वेरी? देयर आर डाइवर्सिटी इन स्टूडेंट्स, सब बच्चे जो अभी क्लास में हैं देयर आर सम फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, डिफरेंट एजेस। सो असाइनमेंट्स विल बी फ्रॉम इजी टू इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड। तो अभी आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मॉड्यूल में थोड़ा सा कोप अप हो जाओ। जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, हु आर नॉट अवेयर ऑफ पाइथन, उनको कुछ भी नहीं आता, दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट हियर। ओके, सो आई सेव दिस। ये मैं आपको शेयर कर देता हूँ अभी सेशन खत्म होने के बाद, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वट एवर मेथड्स। और ये ऐसा नंबरिंग करके जब आप असाइनमेंट बनाते हो ना, टू यू पुट अ नंबर्स, राइट द मेथड विच यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट, डिक्शनरी लो, वो मेथड कॉल करो एंड इट्स आउटपुट, ये तुम्हारे असाइनमेंट के पीडीएफ में होना चाहिए। ओके, एनी क्वेरीज फ्रॉम योर साइड, लिस्ट, टप्पल और डिक्शनरी पे? ठीक है, सो विल स्टॉप हियर टुडे। कल हम सेट्स देखेंगे। ये सर, दिस इज द वे वी कैन डू। अब D2 अपडेट, D1 अपडेट हो गया है। D1 में क्या आ जाएगा? 4 and 5 will be inserted. Good. Yes, you can. अभी जो ऊपर तुमने कोड दिया है ना, वही किया ना? Dictionaries are mutable, so it can be changed. Okay, over to you, Prashant sir. Okay, so if you do not have any queries, we'll stop the session here. Students, you may leave the session. We'll meet tomorrow. Thank you so much, sir. Thank you guys for joining.